बबीता फोगाट जी, यहाँ पर जो साक्षी मालिक है उन्होंने रेसलर्स प्रोटेस्ट से हट गए हैं, विड्रॉ कर दिया है। ये इसका कारण क्या है, आप बता सकते हो? देखिए, कारण तो वही बता सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि कोई ना कोई बात पे जरूर सहमति हुई है और जिस वजह से हटे हैं उनको भरोसा हुआ है। और सबसे मेन चीज है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमेशा ही मतलब चाहे हमारी पार्टी हो पूरी की पूरी, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, उन सब ने हमेशा मतलब महिला। All right, we've lost Babita's line there. Babita is also one of them who's supported and pledged her support to the wrestlers' protest. It's of course from the sense that we got a few statements that she just made right now. She says that we are not sure of Sakshi Malik's decision. This is Babita Phogat's response to Sakshi Malik withdrawing from the wrestlers' protest. She says, we aren't sure, whatever the reasons are, we aren't sure of what reason really led to Sakshi abandoning the protest. Wrestlers, of course, still in Dharna. Their demand is one and only for the WFI chair, the chief of WFI, Brij Bhushan, must be arrested. The POXO case has been levied. In fact, the girl, the minor who's accused Brij Bhushan of sexual harassment among the other adults as well, she has, in fact, right this morning, recorded her statement. That statement was sent in an envelope to the court as well. So as per protocol, investigation is underway. Babita is joining us back on the line. Babita ji, आप बोल रहे थे कि क्या आपको पता है साक्षी मालिक ने प्रोटेस्ट क्यों हट गए हैं? Why is she withdrawn from the protest? देखिए, हमें पता चला कि जैसे माननीय गृह मंत्री जी से मिले हैं और उनकी बातें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी, उनकी जो मांगे थी वो पूरी हुई हैं और जिस वजह से उन्होंने स्टेप लिया है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हमेशा, हमारी पार्टी हमेशा संवेदनशील महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है। और आज भी ये दिखा भी दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि वो हमेशा उन बेटियों के सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमेशा संवेदनशील रही। जी, आपने अब बबीता जी, आपने रेसलर्स को आपने खुद सपोर्ट दिया है? आपने क्या उनके पक्ष पे आपने बात किया है? आपने सरकार पे दबाव डाला है कि ब्रिज भूषण का अरेस्ट होना चाहिए? देखिए, सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन कोई भी चीज को आप अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज का एक समय होता है और एक टाइम पीरियड होता है। कोई भी चीज को समझने के लिए हमें समय चाहिए होता है और समय रहते हुए सारी चीजें सब ठीक हुई हैं। तो मैं इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का। तो आप धन्यवाद करते हो, तो क्या आप ये कहते हो कि जो 2 दिन पहले होम मिनिस्ट्री के साथ, अमित शाह जी के साथ जो मीटिंग हुआ था, साक्षी मालिक के खुद के उनके हस्बैंड ने कहा कि ये मीटिंग इनकंक्लूसिव है, मगर आप आज कह रही है कि मीटिंग में शायद कुछ पॉजिटिव आया है, इसलिए साक्षी मालिक ने प्रोटेस्ट से हट गई है। सच बात क्या है? मीटिंग में क्या हुआ था? आपकी क्या बातचीत हुई है रेसलर्स से? देखिए, मैं सच बात वही मैं कहूँ कि अगर खिलाड़ी खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खिलाड़ी खुद ही पीछे हटे हैं, तो सारी चीजें सामने हैं। तो आपका क्या कहना है बबीता जी कि ये रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं 3 महीने से, क्या इस पे कुछ प्रोटेस्ट में कुछ क्रेडिबिलिटी है आपके हिसाब से? आप प्रोटेस्टर्स के साथ आप जुड़े नहीं हैं, हमें पता चला है कि आप जुड़े नहीं हैं, मगर इतने महीनों तक वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहीं पर स्पॉट पे और अभी तक उनका ब्रिज भूषण जी का अरेस्ट हुआ नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि केस में मेरिट नहीं है? सरकार अपना काम कर रही है या और मेरिट नहीं देख रही है केस में? एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है और न्यायालय अपना काम कर रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जो चीज होगी सबके सामने होगी, न किसी से छुपी होगी और न किसी से के साथ अन्याय होगा। हमें अपने सर्वोच्चम न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। अगर आप भरोसा है आप कहते हो, मगर विनेश फोगाट और जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो कहते हैं कि पॉस्को एक्ट के अंदर
ब्रिजभूषण जी को तुरंत अरेस्ट कर देना चाहिए, मगर अभी तक जो पुलिस है उन्होंने वो ड्यूटी किया नहीं है। आप विनेश फोगाट की तरफ से आपकी कोई मतलब बातचीत हुई है अभी? All right. Babita Phogat, who is one of those wrestlers herself, hasn't really pledged her support to the wrestlers who have been protesting. She's imposed her faith on law and order, hoping that the police will do its duty, but says that the meeting between the wrestlers with Home Minister Amit Shah may have been fruitful. That's possibly the reason why Sakshi Malik must have withdrawn from the protest, but this is her viewpoint. Babita Phogat says that she's hopeful that the government will ensure that law and order will be fully fulfilled. Let me quickly cut across to Yogeshwar Dutt, who's an Olympic wrestler, joining us on the phone line. Yogeshwar जी, यहाँ पर साक्षी मलिक ने विड्रॉ किया है, वो प्रोटेस्ट साइट से हट गई है और अलग कर दिया है अपने आप को प्रोटेस्ट से। ये क्यों हुआ है? आपकी कुछ बातचीत हुई है रेसलर से? नहीं, देखिए मेरे को भी आपके माध्यम से ही पता लगा है, मीडिया के माध्यम से, और मेरी किसी भी पहलवान से कोई बातचीत नहीं है। पर अगर साक्षी मलिक ने अपने वापिस रेलवे में की नौकरी ज्वाइन की है, छुट्टी में थी, तो उन्हें कुछ सोच समझ के अच्छा फैसला लिया, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि पहलवान अभी एशियन गेम्स हैं, अगले साल ओलंपिक है और कुश्ती काफी बुरे दौर से गुजर रही है। ओलंपिक 4 ओलंपिक मेडल आने बाद भी जो पिछले ये टाइम है तो काफी बुरा कुश्ती का लिए रहा। और मेरा मानना है कि साक्षी मलिक ने अगर ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर अच्छा फैसला है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है, जांच चल रही है, कोर्ट अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा, और किसी ने कुछ गलत किया तो सजा मिलनी चाहिए। तो अभी अपना पूरा फोकस अभी एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए लगाए। जी योगेश्वर जी, आपका क्या कहना है कि ये रेसलर्स को ये आंदोलन खत्म करना चाहिए? आप ये बोलोगे उनको? आपकी क्या बातचीत हुई है विनेश फोगाट से और जो रेसलर्स वहां पर बैठे हुए हैं? किसी से बातचीत नहीं, पर मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि भाई मेहनत कीजिए। अब अभी क्योंकि करंट के खिलाड़ी हैं, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के पिछले साल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, अभी एशियन गेम्स अगले साल ओलंपिक का दिन, उसके लिए मेहनत करें और देश को गर्व महसूस कराने से पहले करा है। और ये आंदोलन है, ये तो पहलवानों को मेरा मानना कि बड़े ये भोले और मेहनत किए, पर इनका यूज किया गया कुछ दलों द्वारा। और खासकर 7 तारीख को जो इनको बगला के इनको आगे किया गया और इनके कंधे में जो बंदूक के चलाई गई हमें पक्षी दलों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, ये बड़ा एक गलत मैसेज गया है पूरे देश में कि एक संसद गए उसमें पहलवानों का जिस तरीके से किया, और ये बड़ा गलत हुआ था। पर ये अभी अच्छी बात है कि साक्षी ने अपना वापस मैच कराने का फैसला किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी एशियन गेम्स ओलंपिक है उसके लिए अच्छे वो है, देश के लिए मेडल जीतेगी। ये रेसलिंग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बुरा नाम, ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन बहुत एक रेसलिंग कम्युनिटी के ऊपर एक धब्बा जैसे हुआ है। ये आप क्या कहोगे कि ऐसे जो प्रोटेस्ट उन्होंने 3 महीने से जारी किया है, अभी तक उनको उनके हिसाब से न्याय नहीं मिला है? ब्रिजभूषण को अरेस्ट किया नहीं गया है, पॉस्को केस है, मगर फिर भी पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है। ये आप कैसे देखते हो आगे के दिन में रेसलिंग कम्युनिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, जो इंडिया का परसेप्शन है इंटरनेशनली, ग्लोबली? देखिए, पूरे हर खेल को बड़ा एक नेगेटिव चीज गई है ये पूरे हर खेल के लिए, खासकर कुश्ती के लिए तो है ही। और पुलिस अपना काम कर रही है, फायदा हो चुकी है। अब ज्यादा कानून कार्रवाई के बारे में क्या कुछ करना है वो तो हम नहीं जानते, कि जो भी चीज होगी पुलिस अपना काम कर रही है। और हमें लास्ट में हमें अपने जो हमारा न्यायालय है उस पर हमें विश्वास करना होगा, और जो भी फैसला देता है तो उसका हमें सम्मान भी करना होगा। पर मेरा ये है कि कुश्ती के लिए बड़ा बुरा टाइम ये है, लगातार 4 ओलंपिक मेडल लाने के लिए पूरे देश को खुशी का मौका भी मिला, और ये पिछले 3-4 महीने कुश्ती के लिए बड़े बुरे रहे। ये जो आंदोलन लगा रहे हैं योगेश्वर जी कि WFI जो फेडरेशन है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसको पूरा जो सिस्टम जो है वो पूरा खारिज करके एक नया सिस्टम लगाना चाहिए, नया रूल्स, नया रेगुलेशंस और नया चीफ, एक पूरा सिस्टम ओवरहाउल वो मांग रहे थे। ये क्या आपके व्यू में सही था? देखिए जी, मैं कुश्ती से जुड़ा रहा हूँ और जहाँ तक जितनी मेरी समझ है, जहाँ तक मेरे को पता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी
फेडरेशन वो की जो नेशनल बॉडी उसको ऐसे भंग नहीं कर सकते और ना स्टेट बॉडी भंग कर सकते, क्योंकि ये ओपन बॉडी है। ये जो हमारी जो रेसलिंग कोई भी फेडरेशन नेशनल फेडरेशन है वो सीधी यूडब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी हुई है और आईओसी से आईओए से जुड़ी हुई है। तो इसको एकदम किसी के हाथ में ये नहीं है कि भाई इसको एकदम भंग करके दूसरी फेडरेशन बना दी जाए या कोई स्टेट बॉडी खत्म कर दी जाए। तो जहाँ तक मेरे को पता है ये चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं है, और ऐसी चीजें होंगी तो फिर आने वाले टाइम में और ज्यादा गलत होगा। तो कोई भी किसी को भी ऐसे बैन कर सकता नहीं, फेडरेशन बना सकता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। सीधी बात ये है कि ये यूडब्ल्यूडब्ल्यू के और आईओसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे किसी के साथ ज्यादा मेरा मानना है किसी के पास वो पावर नहीं है कि इसको ऐसे खत्म कर दे, भंग कर दे ऐसे। जी, आपकी अभी कोई बात हुई है अभी तक जो रेसलर्स जो है अभी प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, साक्षी मलिक ने क्यों अलग किया है अपने आप को ये प्रोटेस्ट साइट से? मेरे को पता नहीं, मैं अभी एक मीटिंग में अभी पता करूंगा, अभी बात करूंगा पहलवानों से। अच्छी बात है, पहलवान सारी पहलवान अपनी मेहनत करें, क्योंकि एक अच्छी जगह रह के अच्छे एक सही तरीके से मेहनत भी होगी। जब हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन की मेहनत करेंगे, बिना प्रेशर के, तो वो चीजें तभी हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं जब बिना प्रेशर के मेहनत करेंगे। अभी पहलवान के ऊपर भी पूरा प्रेशर है, एक दबाव है अलग तरीके से का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मेरा मानना है कि बुरे वक्त से संघर्ष करना और आगे निकलना उसी को जिंदगी कहते हैं। तो जब साक्षी ने भी ये जो फैसला लिया है तो मेरा मानना है कि वो इससे जल्दी निकलेगी और मेहनत करेगी और देश के लिए मेडल जीतेगी। मगर जो बाकी के रेसलर्स हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, योगेश्वर दत्त, क्या आप आवाज़ दोगे उनको, एक डायरेक्शन दोगे कि प्रोटेस्ट आंदोलन को बंद करे? ये क्या बोलोगे आप? ये पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जांच चल रही है, जांच शायद वो भी चुकी होगी। अब अपना काम करेगी नाला जी। बड़ी एक योगेश्वर जी, यहाँ पर खबर आई है कि विनेश फोगाट और बजरंग, उन्होंने भी अपने ड्यूटीज रिज्यूम कर दिया है। उन्होंने भी आंदोलन से वो साइट्स, प्रोटेस्ट साइट से दूर हट गए हैं। ये क्या आपका कहना है कि होम मिनिस्ट्री के साथ जो उनका मीटिंग था 2 दिन पहले, ये शायद उसमें कुछ सोल्यूशन निकल आया है? बिल्कुल, कुछ अगर गृह मंत्री जी से बात हुई है तो, क्योंकि अच्छी बात है पहलवानों ने जो गृह मंत्री से बात की और जो उसमें कुछ हल निकला है तो बड़ी अच्छी बात है। उसे कोई भी चीजें हो और उसके बाद इन्होंने पहलवान अगर अपनी नौकरी पे वापस आए हैं, ये ज्वाइन की है, तो अभी मैच पे आएंगे और ये अभी टाइम है इनके पास देश के लिए मेडल जीतने का। अच्छी बात, और खासकर कुश्ती के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो जूनियर खिलाड़ियों के ऊपर जो उनके दिमाग में एक जो नेगेटिविटी गई है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा नेशनल भी इस साल अभी कोई नेशनल भी नहीं हुआ है, अंडर 15 का जो नेशनल, अंडर 17 का नेशनल होना था, और भी तो काफी कुछ चीजें थी जो चीज रुकी हुई थी। तो अभी अच्छी चीज है कि ये चीजें स्टार्ट हुई है, तो ये अभी एक रूटीन में वो चीजें होंगी। और चुनाव एडो कमेटी बना रखी है ओलंपिक संघ ने, तो जल्दी उसके चुनाव भी होंगे, जो नई फेडरेशन जो भी होगी वो हमें मिलेगी। जो वो तो फिलहाल से आगे देखने पर टाइम पूरा हो चुका है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है कि तीनों लोग जो ओलंपियंस हैं, जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग, तीनों लोग जो फेसेस थे, जो रेसलर्स प्रोटेस्ट के जो एक्चुअल फेसेस थे, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो सब अब अपने अपने ड्यूटीज़ पे ज्वाइन कर चुके हैं। ये आपका क्या कहना है योगेश्वर दत्त जी कि इन्होंने जो 3 महीने बैठ के जो प्रोटेस्ट किया, इसका अभी तक सल्यूशन, उनका मानना था कि जब तक बृजभूषण अरेस्ट नहीं होंगे वो हटेंगे नहीं, मगर उससे पहले ही हट गए हैं। तो क्या उन्होंने 3 महीने ऐसे वेस्ट कर दिए हैं आपके हिसाब से, या अच्छी बात है ऐसे केस को प्रोटेस्ट के थ्रू कन्वे करना चाहिए? आप क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं थी। इतना जो हुआ मतलब इतना बड़ा ये जो पूरे देश में एक नेगेटिविटी, तो 3 महीने उनका वेस्ट हो गया है आपके हिसाब से? उनका भी और पूरी कुश्ती को बहुत गहरा धक्का लगा है। कुश्ती काफी एक डाउनफॉल था कुश्ती के लिए। यहाँ पर पहलवानों की ड्यूटी रेलवे नहीं है, इनकी जो ड्यूटी है वो मेडल जीतना और मैच है अभी, क्योंकि ये एक्टिव रेसलिंग में है। तो मेरा मानना है कि वो तो बस ज्वाइन करनी पड़ेगी। मुझे असली जो इनकी जो वो चीजें हैं वो मैच है, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे और जो ये पिछले 3 महीने खराब हुए हैं तो उससे भी निकलेंगे। और जो भी कानून अपना है प्रक्रिया वो चलती रहेगी, कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम करेगा, मगर पॉस्को एक्ट के अंदर अरेस्ट तुरंत होना चाहिए, बृजभूषण का अरेस्ट तुरंत होना चाहिए। जो पॉक्सो एक्ट
के हिसाब से जो एक्यूजेशन है उन पे सेक्शन 10 पॉक्सो एक्ट के अंदर लगाया गया है, जो एक सीरियस ऑफेंस है, और वो ऑफेंस पे ब्रिजभूषण को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, मगर जो हफ्ते हो गए हैं अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है। क्या आपके हिसाब से काम कर रही है पुलिस? देखिए, कानून के बारे में ना तो ज्यादा जानकारी आपको है ना मेरे को है, ना हर धारा का आपको पता ना मेरे को पता। तो पुलिस को पता, अगर गिरफ्तार करने को ऐसी बात होती है गिरफ्तार तो कर लेते उसको, तो उस बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते भी कानूनी कार्रवाई क्या क्या प्रक्रिया है, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा देश में, पूरे देश और दुनिया में है, और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं किया, तो पुलिस ने कुछ अपनी भी कुछ जांच पड़ताल होगी, तो उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता कि भाई पासपोर्ट का जो कानून है वो किस आधार पर किसको किस तरीके से गिरफ्तार करते हैं, क्या उसकी जांच प्रक्रिया होती है। बस मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि कुश्ती के लिए बड़ा बुरा टाइम है। कुश्ती के लिए बुरा टाइम है। योगेश्वर जी, आप क्या कहते हो कि ये जो एशियन गेम्स है इंडिया को होस्ट करना था, मगर ये आंदोलन की वजह से वो इंटरनेशनल ग्लोबल रेसलिंग फेडरेशन, वो ग्लोबल बॉडी जो है, उन्होंने इंडिया को होस्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो ये इसके बारे में आप कुछ कहिए कि इंडिया ने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी जब से ये आंदोलन शुरू हुआ? एशियन गेम्स नहीं था, वो एशियन चैंपियनशिप थी जो इंडिया में होनी थी, और वहां से उन्होंने अभी शायद कजाकिस्तान में, अभी वो यहाँ से कजाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी है वो, और वो दिक्कत होती है अपने देश में होता ग्राउंड में कोई चैंपियनशिप होती है, चैंपियनशिप बड़ा ये टूर्नामेंट था, यहाँ पे पहलवान खेलते अपने देश में, और वो भी देखने का मौका मिलता, नए प्रतिभाई बच्चे देखते उसको, तो उनका भी हौसला बढ़ता है, और अपने घर में टूर्नामेंट मिलता है, कोई चैंपियनशिप मिलती है, तो बड़ी अच्छी बात है। वो नुकसान तो उससे अलग भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अभी तक ना अंडर 15 का नेशनल हुआ, ना अंडर 17 का नेशनल हुआ, तो अभी तक काफी कुछ चीजें, मतलब नेगेटिविटी तो है ही। नेगेटिविटी जो है, मगर ये इतना उन्होंने एक एफर्ट डाला, जो रेसलर्स है इतनी महीनों से ये आंदोलन कर रहे थे, और उनको ये एक था कि जो ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना है, दूसरा रेसलिंग फेडरेशन में है जो भी गलत चीज़ होता है उसका पूरा मतलब एक क्लेंज हो, जैसे सब गलतियां सब मतलब ये फेडरेशन के थ्रू पूरा इरेज हो, और एक नया फेडरेशन खड़ा किया जाए, एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाए, और एक नए रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फ्रेम किया जाए। ये सब वो अब फेडरेशन के लिए और रेसलर्स के लिए, आप जैसे रेसलर्स के लिए उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, ये बोल रहे हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ, अगर यौन शोषण कुछ मामला तो इसकी जांच होनी चाहिए, दोषी सजा मिलनी चाहिए। इससे अलग मेरे को आज तक, मैंने भी इतना लंबा कुश्ती में कह किया, इससे अलग मेरे को भी कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं लगी फेडरेशन कभी भी, चाहे वो स्पॉन्सरशिप की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों की किसी भी चीज की बात हो। अगर ये पर ऐसे यौन शोषण के मामले मेरे को नहीं पता, अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा गलत हुआ है, कोई किसी ने कुछ गलत किया है किसी लड़की बहन बेटी के साथ, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और उससे अलग फेडरेशन में मेरे को लगता है, जहाँ तक मैंने इतना लंबे साल तक इतने लंबे समय से मैं कुश्ती से जुड़ा रहा, मैंने रेसलिंग की, मेरे को कभी कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं लगी। तो आप बोलते हो कि ये आपके हिसाब से सब ठीक था? रेसलिंग फेडरेशन के अंदर जो ब्रिजभूषण थे, जो चीफ थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनके नीचे सब अच्छा चल रहा था आपके हिसाब से? यौन शोषण का अगर कोई मामला है तो बड़ा गंभीर है। इससे अलग ऐसी कुछ चीजें मेरे को नहीं लगी कभी भी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सपोर्टरशिप भी आई है, चाहे वो टाटा की बात हो, चाहे वो JSW की बात हो, चाहे ONGC की बात हो, सपोर्टरशिप भी आई है, खिलाड़ियों को पैसे भी मिले हैं, खिलाड़ियों को विदेशी कोच भी मिले हैं, वो चाहे टाटा की तरफ से हो चाहे कोच की तरफ से हो, उसमें वो चीजें अलग है। बट एक जो यौन शोषण वाला है उसका वो बड़ा गंभीर विषय है, उससे अलग मेरे को नहीं लगता कि भाई फेडरेशन ने कहीं मतलब खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत हुआ है। अच्छा, यौवन शोषण जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसके बारे में आप कमेंट नहीं करोगे, मगर उसके अलावा सब कुछ ठीक चल रहा था आपके हिसाब से। मगर यहाँ पर जो हमें अभी अपडेट मिला है योगेश्वर दत्त जी के, साक्षी कह रही है कि ये अपना ड्यूटी कंटिन्यू करेगी, मतलब जो न्याय के लिए है, जस्टिस के लिए है, वो लड़ेगी। वो शायद में बैठेगी नहीं, मगर वो कंटिन्यू करेगी लड़ने के लिए। बिल्कुल वो कोर्ट में केस है, अभी वो तो लड़ाई तो है, वो अभी उन्होंने सोचा होगा पहलवानों ने कि भाई हमें कोई प्रदर्शन, कोई धरना प्रदर्शन कुछ ऐसा नहीं करेंगे, कानूनी जो प्रक्रिया है कानून के तहत, वो कानून के दायरे में रहेगी, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी बात है। तो ये आप कहोगे कि आंदोलन रोकना है और अपने अपने ड्यूटीज पर रिज्यूम वो कर दिए हैं उन्होंने, मगर वो कंटिन्यू करेगी लड़ने के लिए, ये आप वेलकम करोगे?
देखिए, सबको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, किसी के साथ गलत हो। मैंने अभी बोला कि भाई यौन शोषण कोई मामला तो बड़ा गंभीर है, किसी ने कुछ गलत किया है बहन बेटी के साथ तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने अभी अभी बात बोला, मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोलता हूँ कि किसी ने भी चाहे कोई हो, नीचे से लेके ऊपर तक, किसी की बहन बेटी के साथ कोई खिलवाड़ किया है, कुछ गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। जी, साक्षी मलिक कह रही है कि वो सत्याग्रह करेगी, वो प्रोटेस्ट साइट से विड्रॉ कर दिया है उन्होंने, मगर वो कंटिन्यू करेगी जस्टिस के लिए लड़ना और वो सत्याग्रह करेगी। ये क्या मुमकिन होगा कि ऐसे ड्यूटी पे जाना और सत्याग्रह करना, एक कैसा स्टेटमेंट ये बाहर आ रहा है यहाँ से? योगेश्वर दत्त जी ये बोल ये आप बता पाएंगे कि किस नहीं, मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ कि रेसलिंग फ्रेटर्निटी के लिए ये कैसा इमेज लाता है ये? देखिए, मैंने बताया कि कुश्ती लगा 18 जनवरी से कुश्ती बुरे दौर से गुजरी है, अब आज तक अभी भी गुजरी रही है, क्योंकि कहीं भी नाम आता है तो कुश्ती का नाम एक लोग अलग तरीके से देखते हैं कि भाई। All right, we seem to have lost his line. Yogeshwar Dutt himself, who's a world champion, he's spoken to India today extensively, saying that this has certainly tarnished the wrestling federation, the wrestling fraternity itself of India. In fact, one should know that India has lost out some of the opportunities on international platforms. One of them to host the Wrestling Asian Games that was India's turn to host it. The World Wrestling Federation, because of this case, very specifically skipped India from the order. In fact, Sakshi's husband has spoken to India today. He's spoken on the phone line. We're going to play that out for you. Let's have a quick listen. सत्यव्रत भाई, मैं कह रहा था ये खबर सही है कि साक्षी और आप अलग हो गए हो धरने से? यार आप लोग क्या खबर चलवा देते हो यार? मैं वही इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे, अलग हुए हैं कि नहीं हुए सत्यव्रत भाई? आपके आज तक में चल रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अलग हुए हैं या नहीं हुए हैं। कोई अलग नहीं हुआ भाई, रुको आप इसको, उसके खिलाफ मैं ट्वीट भी करवा रहा हूँ। अलग नहीं हुए ना? नहीं। ठीक है भाई साहब। सत्यव्रत भाई, मैं कह रहा था ये खबर सही है कि साक्षी और आप अलग हो गए हो धरने से? यार आप लोग क्या खबर चलवा देते हैं? All right, that's Satyavarth, who is Sakshi Malik's husband. He says that he's just going to be putting out a formal message on Twitter about their decision to withdraw from the protest site. They will continue. Sakshi Malik says she will continue to fight for justice and continue her satyagraha. But for now, they withdraw from the protest site. Will do my duty along with Satyagraha. This is Sakshi Malik. Her husband has spoken to India today. I'm going to repeat that conversation, play that out for you yet again. Sakshi Malik was the first to withdraw from the protest site, says that she will continue to fight for justice. She's now gone back to resuming her duties with the Indian Railways. And it's not just that, Bajrang Punia as well as Vinesh Phogat, they too, all three Olympians, the faces of these wrestlers' protests, all three of them have withdrawn from the protest site and they've gone back to resuming their duties with the Indian Railways, a government job that's been awarded to them. Now, this comes barely 2 days after their meeting with Home Minister Amit Shah. In fact, on Saturday evening was their meeting with Amit Shah. It went on to late into the night and they came out with a statement saying the meeting was inconclusive. Their demands were not met. They walked out of that meeting because their demands were not fulfilled, is what Satyavarth, who is Sakshi Malik's husband himself, spoke to the media, stating the very same. Satyavarth has also spoken to India today. I'm going to play that recorded conversation for you. But for now, what we know in the latest, Vinesh Phogat, Bajrang Punia, Sakshi Malik, all three of them have now withdrawn from the protest site. I'm cutting across to Milind, joining us for more, our India Today correspondent, tracking of those developments of those wrestlers withdrawing from the protest. Milind, this comes as a big update on the wrestlers' protest as Vinesh Phogat, Bajrang as well as Sakshi Malik. All three of them have now resumed duties with the Indian Railways. But we are still unclear of the reasons to why they've done this. If they had to, then yesterday was a day, Saturday was a meeting with Home Minister Amit Shah. Yesterday was a day they could have withdrawn their protest, citing that investigation is underway. We are going to continue to fight for justice. We are going to go back to our daily routine, our duties. But they waited until Monday for the week to begin.
for them to announce that they're withdrawing from the protest. Is it withdrawing from the protest itself, from the cause itself, or just withdrawing from the protest site? Well, Nabila, as rightly put by you, I will just clarify on 2 points. One, that they are saying that we are withdrawing from the protest, not from the cause, which means that the cause still remains alive. They still want to go ahead and look for a government's intervention and the criminal investigation and the charge sheet, the early charge sheet that should happen on this particular matter. We have confirmation from our sources in the Northern Railway that yes, indeed, all three, Bajrang Punia, Vinesh Phogat, as well as Sakshi Malik, have joined their duties in the Northern Railway, appointed as OSD, officers on special duty under the sports category. And they resumed their duties on the 31st of May. That is what has been conveyed to us. Although this information was not revealed directly by the wrestlers to anyone, we had tried to contact the wrestlers who had met with Amit Shah previously. But remember that they have joined these positions before meeting with the Home Minister Amit Shah, and it was only after that the meeting happened. So if they joined these positions on May 31st, Amit Shah and the meeting with the Home Minister happened after that. So, it could be possible that the government may have asked them to withdraw from the protest first, then come on the same table and have a talk with the Home Minister on what their concerns are. Because, that is how the government also looks at situations. If they want to they want a breakthrough, they would want to talk to them on the same footing, which is why both, all three, in fact, Sakshi Malik, Vinesh Phogat, as well as Bajrang Punia, have resumed their duties in the Northern Railways first on 31st May, and then they have met with Home Minister Amit Shah. They have met over issues of filing of the charge sheet. They have said that the early charge sheet should be filed. I'm expecting that there has been some go ahead on this from the Home Minister's side, and which is why they will not be protesting anymore. But we do not imply that they will be abandoning the cause. They would still be fighting for the cause of the wrestlers there. Nabila. Right, but this has come without a warning, so that's of course raising a lot of questions on what was the reason for them to, pull off from that protest site so immediately without actual declaration. Because knowing them, they're someone who announce their every move when it comes to the protest. In the last few months, they've been announcing every move of theirs on their social media platforms, to the media who has been relentlessly covering them. But this has come as a huge surprise. In fact, 2 days after that meeting with Home Minister Amit Shah, they've today decided that they're going to withdraw from the protest site. Any word on that front, on what was this sudden decision that was taken by those Olympians? In the railways, that they have joined their positions, and only after that they have met with Home Minister Amit Shah. I'm sure there must have been some understanding between them and the government that they are not to reveal this information in the public domain, and that is why perhaps they did not want to announce it upfront, because it has been several days. We are breaking this information, but if they joined on the 31st of May, which means they have quietly resumed their duties in the railways, and then now, the information has been made public, and therefore they have already started working, and they are not back on their dharna at Jantar Mantar as well. So all these things add up together. Of course, they have said we will not abandon the cause, and the cause remains very crucial to them, which includes the investigations, the charge sheet filing, the early charge sheeting, and of course the criminal offences under which Brij Bhushan Saran has been put, in this particular matter in the dock by the wrestlers. All these charges of him, his sexual harassment charges and the POCSO charge of both the FIRs needs to be investigated. And that is something they have relayed to the Home Minister as well. I'm guessing there is clarity from the government as well, and there's an assurance on which they have joined their duties at the railways as OSD sports, and therefore perhaps the government has given them some sort of assurance so that they would not return to the protest, but at least stick to the cause and fight the cause in other means, rather than just
creating a protest environment at Jantar Mantar. Now, Milind, if you could give us some more clarity with regards to the timeline. When was their meeting with Home Minister Amit Shah? And tell us what exactly happened after they reached Haridwar, where they were stopped by a farmer leader there. They wanted to immerse their medals, their Olympic medals, into River Ganga in a sign of protest, symbolic protest. They were stopped by the farmer leaders, the Khap leader. And then what happened? We believe that they wanted to go on a Maun Vrat as well as a hunger strike. They wanted to be on hunger strike at India Gate. Permission was denied to them. So where did they move after that? Where did their protest move? And when was their meeting with Home Minister Amit Shah? When exactly did they withdraw from the protest itself? Well, Nabila, you may remember that on the very inauguration of the Parliament building was the time when the protesters were actually removed from Jantar Mantar because they wanted to march all the way to the new Parliament building. That being a very high security exercise being done, we have seen those visuals of the police and the wrestlers, and the clash between the police and the wrestlers, where Vinesh Fogart, her sister, were on the floor with the Indian flag, and all those images are still fresh in our minds. It was after this that when they were removed from the Jantar Mantar enclosures and their mattresses and other things that were kept there for them, their tents which were erected on Jantar Mantar were removed, is that when they said that, now we are not being allowed to sit back on Jantar Mantar and we will go and take our medals and immerse them in Haridwar. The day that was supposed to happen, what we know from our sources is that when all these medalists, gold, silver, bronze medalists, Sakshi Malik, Vinesh Fogart and Punia, went to the Haridwar to immerse their medals in the Ganga, is when, Naresh and Rakesh Tikait, farmer leaders, stopped them from doing so and said that we will support the daughters of this country. Initially, what we've heard from sources is that, yes, they wanted to immerse the medals, but they were stopped by the Tikaits and the farmer unions. Post which there was a big Mahapanchayat that was held in Muzaffarnagar. That was on Sunday. And after that, there was another Mahapanchayat that was done in Kurukshetra in Haryana. So that, even the Jat Khaps along with the UP Jat Khaps both come together. It was after this that there seems to be a lag wherein they did not go for either of the Khap Panchayats. Let me tell you, the wrestlers had neither gone to the Muzaffarnagar Mahapanchayat and nor were they in the Kurukshetra Mahapanchayat. That itself is a message that they did not want to completely associate with the Mahapanchayats there being led by the farmer leaders. After which, of course, there was a meeting between certain groups, and they then on 31st of May resumed their duties, as what we are being told, because they were not seen protesting anywhere. They were in their homes, back in their homes. They were not protesting anywhere. They resumed their duties in the railways on the 31st of May, after which on the Saturday of this previous week was when the meeting happened with Amit Shah late in the night, wherein certain breakthrough was agreed on. And the major point that was agreed on, as what sources have told us, was the early charge sheeting that should be done in the 2 FIRs that have been filed in the POCSO as well as the sexual harassment case on Brij Bhushan Saran. Of course, the government and the Delhi police in this matter, after the filing of FIR, has said that we will carry on with our investigation and there will be no bias in the investigation, is what the assurances from the Delhi police have also been. We've heard those statements, Nabila, but we've also not heard any official word, of course, from the Home Ministry on this or the MHA sources, but definitely it was from the confirmation of one of the wrestlers' husbands there, who had said that yes, there was a meeting that happened. As you give us information, we're showing to our viewers, Milind, some of those images of Sakshi Malik rejoining duty. She joins back with the Indian Railways, the government job that's been allotted to these Olympic wrestlers. She is now back in action as part of her routine, gets back to her duty. Sakshi says that she will continue to fight for justice, will do my duty along with Satyagraha. This is what she says. Fight will continue until we get justice. Sakshi Malik says not withdrawing from the cause, but the sit-down protests that they had carried on for a few months before that huge dramatic image that we got from Haridwar just 5 days ago. Basically on the 30th of May, we saw some dramatic images of Sakshi Malik along with the other
Olympic wrestlers sitting down, weeping right by the river Ganga, almost throwing away their medals into the holy river. That's when they were stopped by the CARP leaders, the farmer leaders, Rakesh Tiket and his brother, who's literally swooped in and took away their medals, at least held it with them, not allowing the Olympians to throw them away into River Ganga. And at that point, these wrestlers had warned that if the government does not arrest Brij Bhushan in the next 5 days at least, then they will come back to that very same spot and will complete what they had promised, will basically immerse their medals into River Ganga. But it appears that all of that has now been kept to the side and these wrestlers have gone back to joining their duties. And this has, of course, come as a big surprise. Milan joining us for more on that. Milan, these images here are telling Sakshi Malik with a smile, resuming her duties. She's right now with the Indian Railways. That's the government job that's been allotted to them, to the wrestlers. And these are first images of Sakshi getting back to her duty. And seems so with a smile, even as message has come from her that she will continue her protest and her satyagraha until justice. साक्षी मालिक joining us on the phone line. साक्षी जी, यहाँ पर फोटोग्राफ्स आई है कि आपने ड्यूटी रिज्यूम कर दिया है, क्या प्रोटेस्ट बंद कर दिया है आपने? साक्षी जी? The person you are. All right, we're trying to connect with Sakshi Malik herself. These are images of Sakshi Malik as she has resumed duty. She's back in action at the Indian Railways. And this, of course, has come as a surprise because there was a lot of talk about the wrestlers coming back to the protest site, will sit on fast and hunger strike, a strike unto death. That was what they had said a little earlier, 5 days ago, on the 30th of May precisely, when these wrestlers had reached Haridwar to immerse their medals in the holy river Ganga. At that point, they were seen, those images were telling, they were seen weeping, holding those medals so tight to their chest, and were all set to throw them away just when the CARP leaders, the farmer leaders, Rakesh Tiket and his brother, Naresh Tiket, both of them swooped in and stopped these wrestlers from throwing away their medals. He held those medals with him. And at that point, these wrestlers returned and they went away from that spot, warning the government and the police that if they do not take action in 5 days' time, if Brij Bhushan is not arrested as part of the POCSO case that's been registered against him, Section 10 of the POCSO Act, if he's not been arrested in 5 days, then they're going to come back to that site and throw away their medals into River Ganga. But now, barely 5 days later, it appears that these protesters, the wrestlers, have now withdrawn from the protest itself. Milan tells us that they have not withdrawn from the cause. It's just that they have cancelled their protest for the moment. Milan Sharma joining us for more on that. Milan, they have not withdrawn themselves from the cause of the matter here. They still very much stand by the cause. They're going to continue their protest, but in isolation. Is that right? They claim that they will continue with their daily routine, back in job. Sakshi Malik, images coming in that she's back, resuming her duty with the Indian Railways. But she will continue her protest. How does she plan or intend to continue her protest while as part of her daily routine? No, of course, there can be other means to carry on with the cause, which means that she will completely surrender and continue to uphold the cause of the wrestlers and the cases that have been filed against Brij Bhushan Saran. The only orderly way to do this is to obviously have the focus on the charge sheet and the investigation, because obviously the dharna and the way they were protesting was not certainly not going down well with the government. And of course, we know from day one that the government wanted the wrestlers to take back their protest. In this case, of course, after we have images there of Sakshi Malik resuming her job in the railways, we have seen that this is why the protest has now not resumed in physical, but of course, otherwise the cause continues to be upheld by Sakshi, Vinesh, as well as by Bajrang. All right, stay with us. I'm going to cut across to Sakshi Malik, who joins us on the phone line. Sakshi ji, आपने protest से आप दूर हट गए हैं, क्या हुआ है? आपने Indian Railways वापस join कर दिया है. आपका क्या कहना है? ये images जो हमें आया है, आपने ये निर्णय कब लिया? बिल्कुल भी हमने अपना आंदोलन से जो स्टेप था वो बिल्कुल वापस नहीं लिया है और ना ही लेंगे।
जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा और हम लड़ते रहेंगे। और रही बात रेलवे की, तो मेरी कुछ जिम्मेवारियां थी, तो मैंने यहाँ आके अपने 1-2 काम देखे हैं। लेकिन ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये अफवाहें जो है ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए फैलाई जा रही है। जी साक्षी जी, आप धरना में नहीं बैठेंगे तो ये मतलब हुआ कि आप वापस अपने ड्यूटी पर चले गए हैं, तो धरना में बैठेंगे नहीं अब? वो जो भी होगा आगे हम बता देंगे। अभी हम रणनीति बना रहे हैं कि आगे हम इस लड़ाई को कैसे और नया रूप दे सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी साक्षी जी, अब 5 दिन पहले आपने जो रेसलर्स जो है प्रोटेस्टिंग रेसलर्स, आप हरिद्वार पहुंच गए थे। आपने कहा कि आप अपने मेडल्स को गंगा में बहा देंगे और 5 दिन में अगर एक्शन नहीं हुआ तो आप वापस आओगे वहां पर। तो ये आपका निर्णय कब हुआ? आपने डिसीजन कब लिया? All right. We seem to have lost Sakshi's connection there, but we've heard her loud and clear. She says that we're not withdrawing from the cause, but for now, she's back with her duties. They're going to be chalking out a plan on how to take this protest forward. This is Sakshi Malik, who's spoken exclusively to India today. A big update coming in on the wrestlers' protests as we see those wrestlers, 3 of those faces, Olympians, as we see Vinesh Phogat, Sakshi Malik and Bajrang Punia, all 3 of them who have now decided to withdraw from the protest site itself. And this has happened on the 31st of May. Very silently, they've gone back to their performing duties with the Indian Railways and have now decided to stay with the cause, but remotely. They're now chalking out a plan on how to take this protest forward. That's what Sakshi tells India today.